हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल नर्सिंग ट्यूटोरियल और इसमें आज मैं बात करने वाली हूँ प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है हमारा, according the WHO, the World Health Organization developed the policy of health as a response to the problem of the health in the developing countries. The WHO established the concept of health, so called the primary health care concept, which was given a central meaning. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, डेवलप किया था जो कि पॉलिसी थी, हेल्थ पॉलिसी एज अ रिस्पॉन्स टू अ प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ इन अ डेवलपिंग कंट्रीज। जो भी प्रॉब्लम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को उसके हेल्थ को इन्हेंस करने के लिए WHO ने पॉलिसी स्टार्ट किया एंड establish the concept and the concept को establish किया health of health, so called the primary health care concepts. Primary health care concept, the study was introduced in 1978 in the first conference of WHO for health in अल्माटा डिक्लेरेशन 1978। एक वन कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक जो हमारा अल्माटा कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, इन 1978 में। दैट वाज सपोज टू बी इम्प्लीमेंटेड हेल्थ फॉर ऑल वाज अ विजन ऑफ द कॉन्फ्रेंस। और उस कॉन्फ्रेंस का विज़न क्या था कि हेल्थ फॉर ऑल। And the result of this conference of Alma-Ata are summarized in 5 main principles and 8 elements। और जो इसका रिजल्ट इस कॉन्फ्रेंस का क्या निकला था, इनको समराइज किया गया था 5 प्रिंसिपल्स में एंड 8 एलिमेंट्स में। Definition according to Alma-Ata Conference, primary health care is an essential health care made universally accessible to individual and community, acceptable to them through their full participation and at a cost the community and country can afford। अकॉर्डिंग टू द अल्माटा कॉन्फ्रेंस, इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है ये इसेंशियल हेल्थ केयर है, मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल। और ये यूनिवर्सली क्या हो सके, एक्सेसिबल हो सके, इंडिविजुअल और कम्युनिटी एक्सेप्ट कर सके थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन एंड एट द कॉस्ट द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन एफर्ड। और इसका जो कॉस्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए कि जो कम्युनिटी है या जो कंट्री है वो एफर्ड कर सकें। प्राइमरी हेल्थ केयर बेसिकली एसेंशियल हेल्थ केयर है, यूनिवर्सली एक्सेसिबल होना चाहिए, कम्युनिटी और कंट्री जो है हमारी इंडिविजुअल एवरीवन कैन एक्सेप्ट देम, देयर फुल पार्टिसिपेशन एट द कॉस्ट जो कि कम्युनिटी और कंट्री कैन एफर्ड। Then what are the objectives of the primary health care? First one is the reduce in the prevalence of preventable, communicable and other diseases। जो भी prevalence है हमारे preventable disease और communicable disease या other disease को उसको reduce करना है। देन नेक्स्ट वन टू प्रमोट फेवरेबल पॉपुलेशन ग्रोथ स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट हमें क्या करना, फेवरेबल पॉपुलेशन ग्रोथ स्ट्रक्चर को क्या करना, प्रमोट करना है। देन टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ हेल्थ केयर ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी का जो लेवल ऑफ हेल्थ केयर है उसको इम्प्रूव करने के लिए। देन टू डेवलप द कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी एम्ड एट सेल्फ रिलायंस। देन थ्रू द प्राइमरी हेल्थ केयर जो एवरी इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी है और जो कम्युनिटी की कैपेबिलिटी है उन्हें सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए। Then to reduce the morbidity and mortality rate, and primary health care इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा टू रिड्यूस द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट को भी कम करना। देन टू इम्प्रूव द बेसिक सैनिटेशन, एंड बेसिक सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक्सटेंड द इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज विद प्रायोरिटी गिवन टू द अदर सर्विस सेक्टर। देन एक्सटेंड करना हमें इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज विद द प्रायोरिटी गिवन टू अदर सर्विस सेक्टर। Then what are the principles of primary health care? First principle is the equitable distribution. The first key principle in the primary health care is the strategy is equity or equitable distribution of health services. For example, health services must be shared equally by all people, is irrespective of their ability to pay, and all must have access to health services। equitable distribution हमें ये देखना है कि जो हमारा जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बिना किसी हमें एबिलिटी टू पे या ऑल मस्ट हैव एक्सेस टू द हेल्थ सर्विसेज के। देन प्राइमरी हेल्थ केयर एम टू रिड्रेस दिस
imbalance by shifting the center of gravity of the healthcare system from cities to the rural areas and bringing these services as नियर पीपल होम एज पॉसिबल. सो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज तो हमें रीड्रेस करना था और सेंटर्स को हमें जो है शिफ्ट करना था ऐसी जगह पे जहाँ से लोग हैं, फिर कम्युनिटी के लोग हैं, जो पीपल्स हैं, उनको आसानी से उस सर्विसेज को रीच कर सकें या सेंटर्स को रीच कर सकें. देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में क्या था कि जो कंट्रीज आर नाउ कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट यूनिवर्सल कवरेज बाय द प्राइमरी हेल्थ केयर cannot be achieved without the involvement of local communities. सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के इन्वॉल्वमेंट के वी कांट प्रोवाइड द एनी सर्विसेज इफेक्टिवली टू द पीपल्स. सो इसके लिए हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की नीड होती है और उन्हें इनकरेज करना होता है. सो देयर मस्ट बी अ continuing effort to secure the meaningful involvement of the community in the planning, implementation and maintenance of health services. Besides maximum reliance on local resources such as manpower, money and material. The next one intersectoral coordination. So intersectoral coordination means कि हमें क्या करना है, हमें intersectoral coordinate करना अदर सेक्टर लाइक एजुकेशन एग्रीकल्चर से, जिससे हम ओवरलैपिंग को कम कर सकें. सो तो इसमें क्या लिखा है कि टू बी एबल टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ लोकल पीपल द PHC प्रोग्राम नीड टू नॉट ओनली द हेल्थ सेक्टर बट आल्सो द इन्वायरमेंट ऑफ other sector like agriculture, education and housing, and simply expanding and developing the health services cannot achieve improvement in the health status of population. So an important element of intersectoral approach is planning with other sector to avoid the unnecessary duplication of activities. नेक्स्ट वन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. सो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी दैट मीन्स कि जो टेक्नोलॉजी है दैट शुड बी द कॉस्टेबल, जो उसका कॉस्ट है इतना होना चाहिए कि द कम्युनिटी इंडिविजुअल फैमिली क्या कर सके, अफोर्ड कर सके. सो द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड एज द टेक्नोलॉजी दैट इज साइंटिफिकली साउंड, adaptable to local needs and acceptable to those who apply it and those for whom it is used, and that can be maintained by the people themselves in a keeping with the principle of self-reliance with the resource the community and country can afford. Fifth one, the focus on prevention. So focus on prevention, that means कि we have to focus on the prevention of any disease, but also we will focus on the treatment and but prevention of disease, and it is a part of all the constituents of health services. Then what are the elements? So there is basic 8 elements of the primary health care. So all specific services provided will vary in a different countries and communities. The Alma Ata Declaration has outlined it essential component of primary health care like education. So education concerning prevailing health problem and the method of preventing and controlling them. The next one is the promotion of food supply and proper nutrition. Then third one, an adequate supply of safe water and basic sanitation. Then the fourth one, maternal and child health care including family planning. Fifth one, immunization against the major infectious disease. The sixth one, prevention and control of local endemic disease. And seventh one is the appropriate treatment of common disease and injury. The provision of essential. Eighth one is the provision of essential drug. So basic these are the components like education, nutrition, water and basic sanitation, family planning, immunization, endemic disease, common treatment for disease, common disease and injury, and essential drugs provision. The role of the community health nurse. So the community health nurse must have the planner role and programmer and provider of nursing care. So as a planner, identify need and priorities and problem of individual, family and community. Then provide the technical assistance to a rural health midwife in the health matter. Then next one is the formulate the municipal health plan in the absence of medical doctor. Then provider of nursing care. So provides direct nursing care to the sick or disabled in a home, clinic, school as well as the workplace.
Then community health nurse work as a community organizer. So community organizer जैसे कि motivate and enhance the community participation in term of planning, organizing, implementing and evaluating of health services. Then initiate and participate in community development activities. And next one, coordinator of services. So coordinate the nursing program with other health program like environmental sanitation and health education, dental health and maternal health. Then health educator. So as a health educator, so initiate the use of media like radio, TV and print ads for health education purpose and conduct the premarital counseling also. So nurse as a health educator educate to the people like premarital counseling related and by using the several medias for health education. Next, change agent. So change agents to motivate change in the health behavior in the individual, family group and communities. That also include like lifestyle in order to promote the health and maintain of health. So promote like lifestyle से related जो भी इंडिविजुअल है पर्सन है कम्युनिटी को मोटिवेट करना उनके बिहेवियर को इन्हेंस करना. Then health monitor. So detect the deviation from the health of individual come on the family is a group and the community through the contact and visit with them. The nurse work role is a recorder and reporter. So prepare and submit required report and record. The next one, review the validate, consolidate and analyze and interpret all the record and report. The nurse work a role as a researcher. So participate in the contest of the survey studies and research on a nursing and health related subject. So now I am going to summarize the topic. So till now we have discussed the primary health care and its introduction, definition of primary health care and the objective of primary health care, principles of primary health care and 8 elements of primary health care and the role of community health nurse in the primary health care. Thank you class.